Okay, good morning class 9 students. So class 9 students, today I am going to discuss one poetry from your English textbook, and it is, as you can see here, the poetry's name is Wind, W-I-N-D, Wind. So the poetry's name is Wind, W-I-N-D, Wind, and the writer of this poetry is, the poet's name is Subramani Bharati, Subramani Bharati, Subramania Bharati. Okay, S-U-B-R-A-M-A-N-I-A, Subramania Bharati, B-H-A-R-A-T-I, Subramania Bharati. Okay. Okay students, now look at the text of this poetry. So the first stanza of this poetry begins like this: wind come softly, wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. So here in this stanza the poet wants to say, हवा धीरे से आओ, खिड़कियों को दरवाजे मत तोड़ो, खिड़कियों और दरवाजे मत तोड़ो, कागजों को मत बिखरो, पुस्तकों को मत गिराओ, जरा देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया, तुमने पुस्तकों को जो पन्ने हैं उसको फाड़ दिया, तुम फिर से वर्षा भी ले आए. So if we explain the first stanza, it is like this: the poet asks the wind to blow softly and not break the shutters of the windows. He asks it not to scatter the papers here and there. He also asks the wind not to throw down the books on the shelf. The whole stanza implies a rebuke to the wind not to do these things as it is famed to do. It is shown as a very powerful divine agency. It has thrown all the books down. It has brought the rain also. So in Hindi we can say, कभी हवा से धीरे धीरे बहने के लिए और खिड़कियों को दरवाजे ना तोड़ने के लिए कहता है, वो ऐसे कागज इधर उधर ना फेंकने के लिए कहता है, वो हवा को पुस्तकों को शेल्फ से नीचे ना फेंकने के लिए भी कहता है. ये एक ताकतवर संस्था के रूप में दिखाई गई है. इसने सारी पुस्तकों को नीचे फेंक दिया है, एक वर्षा भी ले आई है. Okay students, now look at the third stanza of this poetry, Wind. He will not, so the third stanza of this poetry is like this: he will not do what you tell him, he will not do what you tell him. So come, let's build strong homes, let's joint the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. So in Hindi we can say, वो जो तुम उसे करने को कहोगे वो नहीं करेगा. आओ हम मजबूत घर बनाए, हम दरवाजों को मजबूती से जोड़े, शरीर को शक्तिशाली रखने का अभ्यास करे, दिल को स्थिर रखे. ऐसा करो और हवा हमारी मित्र बन जाएगी. So if we explain this stanza in English, it will be like this: the poet now turns to the readers. He says that the wind god will not do what they will tell him to do. The readers should build strong home to counter the harmful effect of the wind. They should join the doors firmly so that the wind does no harm to them. Also they should train their bodies and hearts in such a way that the wind dares not harm. If they are able to do so, the wind shall be friendly with them. This implies that if we are strong physically and emotionally, no power on earth can harm us. This implies that if we are strong physically and emotionally, no power on earth can harm us. But if we are weak, anything can harm us. In it lies the essence of the poem. So if we explain this stanza in Hindi, it will be like this:
कभी आप पाठकों की तरफ मुड़ता है, कभी आप पाठकों की तरफ मुड़ता है। वो कहता है कि हवा रूपी देवता वो कुछ भी नहीं करेगा, जो भी उसे करने के लिए कहा जाएगा। पाठकों को हवा की हानिकारक प्रभाव का सामना करने के लिए मजबूत घर बनाना चाहिए। उन्हें मजबूती से दरवाजे बंद करने चाहिए ताकि हवा उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। उन्होंने अपने शरीर और दिलों को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए कि हवा उन्हें हानि पहुंचाने की हौसला ना करे। यदि वो ऐसा करने के लिए सक्षम है तो हवा उनके साथ मित्रता का व्यवहार करेगी। इसका अप्रत्यक्ष रूप में अर्थ है कि यदि हम शरीर और भावना से मजबूत हो तो पृथ्वी पर कोई भी ताकत हमें हानि नहीं पहुंचा सकती, परंतु यदि हम कमजोर है तो हर एक वस्तु हमें नुकसान पहुंचा सकती है। Okay students, it was all about your this poetry. So what is this poetry's name? It is Wind, and the writer and the poet's name is Subramani Bharati, and I hope all of you have understood it very well. Thank you all the students of class 9.